Hello viewers, the question is in exercise 4.11, that is there is a reference of previous problem, this problem. Obtain the frequency of revolution of electron in its circular orbit. Does the answer depend on the speed of the electron? Explain. So this problem is referring to the previous problem in which some data is given, and according to the above problem we have to find out the frequency of revolution, and we have to check whether the answer depends upon the velocity or not, speed of the electron or not. So we know that when there is a charged particle moving in a circular path in the magnetic field, then the radius of the circular path is given by r equals to mv upon bq. Now v we known as v is equal to r omega. We put the value of v here as r omega. Now this r cancels with this r, and we get the value of omega is equal to bq upon m, or we can say that 2 pi nu is equal to bq upon m, or nu is equal to bq by 2 pi m. So from this equation we can easily see that the frequency does not depend upon the speed of the electron. So we say that the answer is no. The speed of electron is not required to calculate the frequency of the revolution of the electron. Now let us calculate the frequency. Omega is equal to bq upon m. Putting the respective value, first of all we convert the value of the magnetic field which is given in Gauss to the value in Tesla by multiplying it with 10 to the power minus 4. So 6.5 into 10 to the power minus 4 into the charge of electron, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, upon the mass of the electron, which is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Now putting the value 2 pi nu in place of omega, because omega is the radian frequency, radians per second frequency, and nu is the cycles per second frequency or the hertz frequency. So we have to calculate the hertz frequency. Now putting the respective values, cross multiplying this 2 pi here, we get this value as 1.8 into 10 to the power 7 hertz, or we can say it as 18 megahertz. So this is the frequency of revolution of electron. So this is the answer. तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है जो कि पिछले क्वेश्चन को रेफर कर रहा है, जिसमें कि पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा सर्कुलर ऑर्बिट में। पिछले क्वेश्चन में एक डेटा गिवन था जिसमें बताया गया था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, और उस इलेक्ट्रॉन को जो है एंटर कराया गया था, भेजा गया था नॉर्मल टू द फील्ड। हमसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका पाथ सर्कुलर क्यों होगा और उसकी रेडियस क्या होगी, तो वो हमने पिछले क्वेश्चन में वो चीज़ सॉल्व कर ली थी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला जो हमने पिछले प्रॉब्लम में यूज़ किया था, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन बी क्यू, यहाँ वी के प्लेस पे हम रख सकते हैं आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से हमें पता है कि वी और आर और ओमेगा में ये रिलेशन होता है। तो यहाँ आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आती है बी क्यू अपॉन एम। बी हमें गिवन है गॉस में, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे टेस्ला में। उसके बाद चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन केजी में पुट करेंगे, और 2 पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें रेडियंस पर सेकंड की बजाय आंसर चाहिए हर्ट्स में। तो यहाँ पे सब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ये आंसर आता है 1.8 into 10 to the power 7 hertz या 18 megahertz. So this is the answer. Hope you understand the explanation. Thank you.